ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायणं, ओम ह्रीं नमो सोये सप्तशो पंचन मुक्तारो सर्वपावपणाशनो मंगलानंत सभ्येसिं पदमं हवै मंगलम, पदमं हवै मंगलम। हाँ डॉक्टर संजय जी चालू करें आप। हाँ बिल्कुल सर, तरुण जी चालू करेंगे सर। मुनिश्री का बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दोनों ने एक अपना अपना व्यू रखते हैं, और दोनों के व्यू को हम ठीक से समझ सकें, इसलिए स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन एंड केजे सोमैया दोनों मिलकर मंथली ऑनलाइन सेमिनार आयोजित करती हैं, जिसमें अब तक विभिन्न टॉपिक पर विभिन्न एक्सपर्ट्स ने अपनी रिसर्च के द्वारा अपने व्यूज रखे हैं। महेंद्रकुमार जी ने सुनाया। इसी कड़ी में आज 8th नेशनल सेमिनार होने जा रही है, जिसपे इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो ग्रीड इट्स रिजोल्यूशन थ्रू स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, यानी कि लालच आध्यात्मिक तकनीकों के साथ इसका समाधान। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस टॉपिक पर अपने बीच विभिन्न स्पीकर के रूप में प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर अभिजीत कुमार जी हैं, और अपने कुमार नौलखा जी हैं, कमल नौलखा जी, और डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, जो अपने एक्सपर्ट व्यूज इस लोभ को किस तरह से और आगे विभिन्न आयामों के द्वारा समझने का हम प्रयास करेंगे। पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ में आज डॉक्टर वर्षा जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आज एक विशेष बात है कि हमारे बीच में वाइस चांसलर केजे सोमैया के वाइस चांसलर डॉक्टर पिल्ले जी भी उपलब्ध हैं हमारे साथ में। और एक विशेष बात है कि आज एसपी जैन शायद अभी थोड़ी देर बाद जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी जगह पर एक विशेष फैकल्टी, जो एडिशनल फैकल्टी जैन धर्म स्टडी में जैनिज्म पर अपने केजी सोमैया के साथ जुड़ी हैं, वो है डॉक्टर अरिहंत जैन। वो भी आज अपने कोशिश करेंगे कि हमारे इस कड़ी में आज कुछ अपने कंट्रीब्यूशन करें। एक अच्छी बात है कि आज अभी हमारे केजे सोमैया में 2 जैनिज्म के फैकल्टीज हो गई हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लोभ, यानी ग्रीड है। इसके रहते जीव भव भ्रमण की अनंत यात्रा उसकी चलती रहती है। इसके छूटते ही आत्मा को जो घात करने वाले जो मुख्य कर्म है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते, और जीव आत्मसिद्ध, मतलब आत्मा उसकी जीव सिद्ध बुद्ध होने की ओर अग्रसर हो जाती है। लोभ सभी प्रकार के आप जैसे जानते सभी प्रकार के जीवों में वो व्याप्त रहता है। आधुनिक युग की अगर हम बात करें आज की कड़ी में, तो हम देखते हैं कि लोभ हर स्तर पर असर करता जा रहा है। माइक्रो लेवल हो या मैक्रो लेवल हो, उसकी अपनी एक भूमिका है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखें या पारिवारिक रूप में देखें, सामुदायिक रूप में देखें, वैश्विक रूप में देखें या व्यापारिक रूप में देखें, वो हर तरह से अपना असर दिखाता है। अगर हम अलग अलग जीवों की कैटेगरी के रूप में समझने का प्रयास करें, वो देवताओं में ऐश्वर्य के रूप में हो या तिर्यंचों में खाने के लेकर हो, मनुष्य में तो हर स्वभाव में पूरी तरह से रचा पचा है वो हर तरह से। वैश्विक स्तर पर अगर आज की तारीख में देखें, विस्तारवादी सोच इसका एक नतीजा है, जो बॉर्डर पर हमको समय समय पर भयंकर जंग के रूप में दिखा हुआ है। स्पेस की लड़ाई तक आज तक तो पहुंच गया है। इसकी समग्रता आज हम इस पूरे सेशन की यात्रा में लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर पिल्ले जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपने कुछ इस टॉप मतलब कुछ 2 शब्द के साथ आज हमारे साथ उपलब्ध हों। डॉक्टर पिल्ले जी अगर उपलब्ध है तो प्लीज आप आमंत्रित हैं। Thank you very much. First of all, let me welcome all the experts of the 8th National Seminar on Science and Spirituality, organized by the Spirituality Technology Research Foundation and in collaboration with the KJ Somaiya Institute of Dharma Studies under the Somaiya Vidya Vichar University. I value the presence of
Honorable Professor Munishri Mahendrakumar Ji. I am extremely glad that for the last 8 months, this program is going very systematically, and very eminent academics from STRF and the Somaiya Institute are participating in this event. I am not an expert in the field, as all of you know. सर आपका म्यूट हो गया है. I was moved all the time. No, sir, in between it got muted. We could hear you in the beginning. So I am a scientist basically. I am a chemist. I also understand the importance of science and spirituality. I believe that they are two sides of the same coin, and it is very important to arouse the spirit of the individual and the community through repetitive practices, which are common to all religions, and but in particular, Jainism believes in such performances in a very systematic way, and we have seen the results of such thing in the overall upliftment of the society. And maybe the different practices, religious practices, in alleviating or eliminating the negative things in life, it's very important to have such interventions. I also see that eminent experts are participating in these events. I had, out of the 8 events, four I attended. I remember 4 I attended from the inaugural function. Of course, we were all together. And it is also important that we take this forward to young students. I would definitely like to have maximum number of participation students in these activities. And maybe we would even bring some of the students, 1 or 2 students also as panelists in such interventions. It's very important, because otherwise there is a feeling that the religion, spirituality, all these things are which are probably meant for people who are retired, who are not in active service. It is not true, and youngsters are really interested to know what is happening in religion, and in the current world context, it is very important to understand the importance, the connection between science and spirituality, how complementarily they function, and therefore these interventions are very important. Let me wish this program all success, and I look forward to concrete collaboration with the STRF and the Somaiya Vidyavikara University through its Center for Jainism, as well as the overarching institution, KJ Somaiya Institute of Dharma Studies, for evolving some concrete interventions for promoting education, research, and consultancy in these areas of spiritual research in this area. Thank you very much. I wish the program all success. थैंक यू पिल्ले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने आज के मतलब इस सेशन में अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल करके इस पे अपने व्यूज रखे. नाउ आई वेलकम डॉक्टर संचेती रिसर्च, डायरेक्टर रिसर्च STRF, to take this journey to a destination. डॉक्टर प्रताप संचेती जी. धन्यवाद तरुण जी. पहले मैं वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. आपने जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही थी कि हमें विद्यार्थियों को या यंग पीपल को एज ए पैनलिस्ट एनरोल करना है. मेरे ख्याल से अगर हम ये तय कर पाए तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. Now I'll go into the introduction of the topic before the speakers come in. Greed is a very beautiful term, but it has been made rough by human behavior. It's a very soft emotion. Greed, like I'm looking for this conference or this monthly seminar every month. It's a greed, but it's not rough. When it becomes rough,
when I try to gain out of it something that. So the greed is one of the essential emotion with the human life. In fact, it's all the life has got the greed in them, in a small form or in a big form. Where we fail is that we go for storage of that. The greed comes to the storage because the greed is for the desire for everything or anything, whether material, power, or security. It's a greed for everything it can be or anything can be. But when it becomes excess, it becomes harmful to others, it becomes a negative emotions or a harmful emotions. Basically, greed invites security for self and the society. So this is a beautiful part or the good part of the greed. And it can achieve the personal and the social goals. But when personal goal overpowers the social goals, greed becomes a negative emotion or a rough emotion. So greed, which we will be talking today, is an uncontrolled desire to increase material, whether it's the wealth, whether it's the money, social status, or the power. And the reasons for greed are, we have got many negative emotions like holding to हम 7 पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, हम 2 पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, पर अपने लिए क्या कर रहे हैं? Greed is the main one, that you have to do it for yourself. If you are doing it for the 7 पीढ़ी या 2 generations, it's not a good one. Comparison. What you have got, what I have got is not sufficient. What I got better than the other person, that is another one. Overspending, entitlement. These are some of the negative aspects of this one. But main reasons for being greedy are early life negative experiences. Children who have been exposed to the negative emotions, deprivation, or punishment from the peer, from the parents, or from the other social leaders, they often suffer from the greed. So, and second reason is the peer pressure. So these are the 2 important factors. Coming to the neurological or the biological aspect of the greed. Greed is, as you know, there is an emotion. It is interacting the lead. You see the red dots and you see the blue dots in the diagram. You can just imagine, this is a imagination diagram, where the blue dots represents the good emotions and the red dot demonstrates the negative emotions. But the hormonal which we have analyzed are the dopamine is the main hormone which is responsible for the greed. It is a pleasure hormone which is situated or mainly acting in the midbrain at the nucleus accumbens. I'm not going into the detail, but it works for the reward, memory, attention, motivation, and the mood. But when excessive dopamine comes, people land up into the greed, gambling, and all other sort of negative or the bad emotions. So the dopamine in a good dose is a good one, but in the excessive dose, it is so excess of everything is harmful, perhaps the hormone this tells us. Coming to the last portion, what is the structural basis? Is the greed is just a out of blue emotion, or it is a well formed within our brain? What we have studied through the functional MRI, the MRI which is studies the functions of the brain, and you can demonstrate the things. We have got the 3 important networks, either executive control network, which is there for the self-regulation. This is situated in the frontal and parietal lobe, and when it controls your own work. And another is the salience network, which is in the frontal lobe, prefrontal lobe, and the lateral aspect of the prefrontal lobe. It is motivationally relevant stimuli are taken into consideration. And the third important one, the main one, is the default mode. This is the work totally when you are not active.
It is self-reflection and empathy. It is inside you. And this is the where the whole thing keeps on working. Constantly you are, whether you are awake, you are unconscious, or you are sleeping, it keeps on working. And excessive working leads to the bad things. That's the what in general meanings. Excessive working of the default mode network works in the, and main reasons, main achievement of the meditation will be if you can slow down the default mode network. That is the where the whole thing will come into. And as I pointed out, disbalance amongst all these three will lead to negative emotions, including the greed. With this short background, we will proceed to the main program, and I'll just stop the sharing, and I'll invite Dr. Anilkumar Jain. Is a renowned scholar, very active member of the Jain Academy of Scholars. He'll be talking to us on the certain aspect of the greed, how it will be helpful, how it will be harmful, and how it can be corrected. Some of the aspects he'll be taking up. I invite Dr. Anilkumar Jain to start his deliberations and enlighten us with his knowledge. Thank you very much, Sancheti Saab. Respected Munishri, Vice-chancellor Dr. Pillai ji, and all other dignitaries. ग्रीड का बैकग्राउंड दिया जा चुका है. ग्रीड देखने में तो बहुत ही छोटा शब्द लगता है, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो खुद को भी प्रभावित करते हैं और समाज को भी प्रभावित करते हैं. किस तरह से करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम ग्रीड किसे कहें. तो अभी आप डॉक्टर संचेती साहब ने बैड इमोशंस और गुड इमोशंस की बात करी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो ग्रीड को हिंदी में लोभ भी कहते हैं, लालच भी कहते हैं. आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा ग्रीड कहलाती है. अधिक पाने की इच्छा, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, कि किसी भी तरह किसी भी रूप में हो सकती है. इट मे बी फूड, मनी, पावर, स्टेटस, कुछ भी हो सकता है. जैन धर्म के हिसाब से इसे लोभ या लालच के रूप में लिया गया है और उसे कसाय माना गया है. जो आत्मा के भीतरी परिणामों को कलुषित करे, जो आत्मा के गुणों का घात करे, उसे कसाय कहते हैं. कसाय 4 प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ. लोभ इन सब कसायों में सबसे हठीली है. जैन धर्म के अनुसार इसका अस्तित्व 10वें गुणस्थान तक रहा आता है. अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए व्यक्ति कभी क्रोध करता है, कभी अपने रुतबे, पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करता है, तो कभी मायाचारी भी करता है. इसीलिए इसी प्रकार वह लोभ के वशीभूत होकर हिंसा, झूठ और चोरी का भी सहारा लेता है. इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है. जब लोभ की तीव्रता होती है तो वह क्रोध, मान और माया को भी अपने अनुसार चलाता है. इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं. एक ग्राहक किसी कपड़े की दुकान पर जाए और 1 घंटे तक तरह तरह के कपड़े खुलवाता रहे, ऊपर से चाय पीने बैठ जाए और फिर भी कपड़ा ना खरीदे. इस स्थिति में दुकानदार को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है. वह मन में अनेक प्रकार की गालियां भी देता रहता है, लेकिन गुस्से को उजागर नहीं करता है. उसका लोभ इस गुस्से को दबा देता है, क्योंकि उसको लोभ इस बात का रहता है कि आज नहीं खरीदा तब कोई बात नहीं, कल तो खरीदने आएगा ही. इसी प्रकार दुकान का कोई छोटी उम्र का व्यक्ति ग्राहक बनकर आए, दुकानदार भले ही उम्र में और हैसियत में उससे कितना भी बड़ा ना हो, क्यों ना हो, लेकिन इस लोभ में कि ये ग्राहक है, कुछ खरीदेगा, उस छोटे व्यक्ति को भी आइए सेठ जी, आइए भाई साहब, इस तरह से कहकर संबोधित करता है. यहाँ दुकानदार अपनी हैसियत और उम्र का भी ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि उसको यहाँ पर यह उम्मीद रहती है कि वह कुछ खरीदेगा. तो यहाँ पर जो उसका जो लोभ है
वो उसके इस मान को भी कम कर देता है, जो स्वाभिमान है उसको भी कम कर देता है। अधिक धन पाने के लिए कई बार मायाचारी भी करता है, हल्के माल को अच्छा करके दिखाने का प्रयत्न करता है। यदि व्यक्ति का लोभ अधिक अधिक बढ़ता जाए तो वह जीवन को भी नीरस बना देता है, उसके जीवन से प्रसन्नता समाप्त होने लगती है। ऐसा व्यक्ति किसी से अधिक बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है। उसके जीवन में शांति, करुणा, सहानुभूति जैसी भावनाएं समाप्त होने लगती हैं। वह सिर्फ अपने धन को बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता है। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति अनेक नैतिक और अनैतिक कार्य में अंतर करना भी भूल जाता है, अनएथिकल एक्ट करने लगता है, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल तक नहीं रख पाता है। मौत सामने खड़ी हो तब भी वह लोभ के वशीभूत रहा आता है। लियो टॉल्स्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी है कि हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। उस कहानी के अंदर बड़े बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि एक व्यक्ति अधिक जमीन पाने की लोभ में वह सुबह से लेकर के और सूर्यास्त तक घूमता रहता है, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि सूर्यास्त होने से पहले पहले जितनी जमीन पर वह चलेगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। और पाने के चक्कर में वह जमीन को पाने के लिए अंत सांस तक वो दौड़ता रहता है, और जब वह छू लेता है उस टारगेट को तो उसकी मौत हो जाती है। तो जिसने भी यह घोषणा करी थी कि इसको इतनी जमीन दी जाएगी, वो अंत में एक डायलॉग कहता है, ये नाहा कितना दौड़ता रहा, इसको कितनी जमीन चाहिए थी, मात्र 2 गज। तो इसका मोरल यही है कि हम ये जिंदगी भर ये घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं धन के लिए, लेकिन ये है कि हमको अंत में चाहिए कितना। ये हम जो खाते हैं, पीते हैं या सोचते हैं, उसका हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इमोशंस की बात कही, मानसिक रोग भी है। मैं तो इसको मानसिक रोग ही एक तरह से कहता हूँ। जहाँ अधिक लालच की हावी होने लगे तो समझ लीजिए कि वह मानसिक रोगी हो गया है। लालच का निरंतर विचार या सोच ही तो मानसिक रोग है। यह हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होने वाले रस स्राव में संतुलन बिगाड़ देता है। यह असंतुलन शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, शरीर में अनेक बीमारी पैदा करता है। लालच की तीव्रता खाने के स्वाद को भी बिगाड़ देती है। व्यक्ति को भूख प्यास का भी होश नहीं रहता है, नपुंसकता आ जाती है, थकान होने लगती है। जब हम लालच के वशीभूत होकर अपने एक निर्धारित लक्ष्य को पा भी लेते हैं तो और अधिक लोभ पैदा होता है, अधिक पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। इस प्रकार हम अपना गोल चेंज करते रहते हैं। अपने यहाँ पर देसी कहावत भी है कि 99 के फेर में पड़ना, वो इसी पर मतलब इसी बैकग्राउंड को लेकर के बनी हुई है। तो जब एक और खास बात, जब अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेता है। सन 1990 का दशक सबों को याद होगा, क्योंकि हम सब थोड़े उम्र वाले हैं। शेयर बाजार में बहुत तेजी थी। कोई भी हो, पान वाला, बीड़ी वाला, हर कोई शेयर में उसमें लगाने लगा। मैंने खुद देखा है, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं बताता हूँ। तो उसमें जब शेयर के दाम बढ़ रहे थे बहुत अच्छा लगा, जब गिरने लगा तो बहुत सारे जमीन पर आ गए। कई लोगों ने सुसाइड किया। आए दिन जब मैं उस टाइम अहमदाबाद में था, पता लगता था कि कंकरिया लेक में आज इसने सुसाइड कर लिया, आज वो कूद के मर गया। तो ये सब हमने देखा है। तो लोभ हमको कहाँ तक ले जा सकता है, इस स्थिति को हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अब इस लोभ से कैसे बचा जाए, सवाल ये है। यहाँ पर बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, जिसको के हमारे मुनि महेंद्र कुमार जी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उससे जो एक सूत्र निकल करके आता है, हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही कहावत के रूप में आज की तारीख में तो प्रसिद्ध है। कबीर दास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो कहने का मतलब ये है कि इस लोभ को से बचा कैसे जाए। उस लोभ से बचने का एकमात्र उपाय जो सामने नजर आता है वह है कि हमको
संयम धारण करना पड़ेगा, हमको संतोष धारण करना पड़ेगा। यहीं पर वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात हम सामने रख सकते हैं। एक मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत ही अभी तक याद है, थी तो चित्र कथा। एक कुम्हार था, वह पेड़ के नीचे घड़े रख करके बैठा था और वो ईंट लगा करके सिर के नीचे सो रहा था। इतने में एक सेठ जी आए, कार से उतरे और उससे एक मटका खरीदा। सेठ जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे इतनी गर्मी के अंदर देखो, मुझे तो मैं अभी ऐसी कार से निकल के आ रहा हूँ और इतने पसीने छूट रहे हैं और तुम ऐसी गर्मी में पेड़ के नीचे पड़े हुए हो, तो एक छप्पर क्यों नहीं डाल लेते हो? तो वह कुमार कहता है कि इससे क्या होगा? तो कहने वो बड़ा, सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसको समझा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने फिर स्पष्ट किया, अगर तुम्हारे पास छप्पर होगा तो ग्राहक और अधिक आकर्षित होंगे, तुम्हारी छप्पर की छाया में खड़े हो सकते हैं, तुम्हारी ग्राहकी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा और क्या होगा? अरे जब ये तुम्हारा ग्राहकी बढ़ेगी तो तुम्हारा पैसा ज्यादा आएगा, एक पक्की दुकान बना सकते हो, एक नौकर रख सकते हो। तो फिर पूछता है कि फिर उससे क्या होगा? वो कहने लगा कि जब नौकर रखोगे सारा काम नौकर देगा, तुम आराम से सोना। तो इतना सुन करके कुमार कहला वो तो मैं अब भी कर रहा हूँ। इतना कह करके फिर वो सिर के नीचे ईंट लगा करके सो गया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ संतोष है वहां कैसी भी गर्मी हो, कैसी भी सर्दी हो, सब में उसको सहानुभूति होती है। लेकिन जब लोभ सताता है तो ये सब जो प्रसन्नता है वो समाप्त होने लगती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, आप सबों ने भी देखा होगा कि जो संतोषी है और जो मेहनती है उसको खूब अच्छी नींद आती है। लेकिन बहुत से ऐसे धनाढ्य लोगों को भी देखा है जो नींद की गोलियां खाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके सोते हैं, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती है। तो ये क्या है कि हमको संतोषी होंगे तो यह सब चीज हमको प्राप्त हो सकती है। अब ये तो हमने व्यक्तिगत बात करी कि इंडिविजुअल लेवल पर लोग किस तरह से परेशान होते हैं। अगर हम ये वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर अगर हम विचार करें तो स्थिति और भी अधिक भयावह लगती है। लोभ और लालच ने इंसान को इतना अधिक अंधा बना दिया है कि उसे आने वाली पीढ़ी की भी चिंता नहीं है कि वह ढंग से सांस ले भी पाएगी या नहीं। विश्व भर में पर्यावरण सुरक्षा, मैं इसमें पर्यावरण को बीच में लेकर के आना चाह रहा हूँ, किस तरह से लोभ और लालच और ग्रीड हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और आने वाले दिन किस तरह के होने वाले हैं। विश्व भर में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता। विकसित और विकासशील देश और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित तो नजर आते हैं, लेकिन समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें पॉलिटिकल विल की कमी है। उसका खास कारण है कि आज विश्व भर में जितनी भी नियम और कानून बनते हैं वो उद्योगपतियों के फेवर के हिसाब से ही बनते हैं। तो उद्योगपति हैं वो तो उनका एक ही उद्देश्य है, अधिक धन कमाना। अभी बक्सवाह के जंगल एमपी में बहुत लोगों ने आंदोलन किया, मैं देख रहा था। वहां हीरे की खानें हैं तो हीरे निकालने के लिए जंगलों को काटने के प्रयास हो रहे हैं। इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था के युग ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को और अधिक लालची बना दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। हमने हवा, पानी, जमीन सबको प्रदूषित कर दिया है। इसका असर दिखने भी लगा है कि कहीं असमय वर्षा हो रही है तो कहीं अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। स्वच्छ हवा और पानी के अभाव में अनेक नए रोग पैदा हो रहे हैं। अब तो वैज्ञानिक भी यह विचार करने लगे हैं कि इस ग्रह पर मानव जाति कितने और समय तक जीवित रह सकेगी। हम सबों को ध्यान होगा, जहां तक मेरा ख्याल है कि 2001 या 2 में ये फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग इंडिया आए थे। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि यदि हम मानव जाति को हजारों वर्ष तक जीवित रखना चाहते हैं तो हमें दूसरे ग्रहों पर मानवों की कॉलोनियां स्थापित करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी इस तरह की नहीं रह पाएगी कि यहाँ पर ढंग से सांस भी ले पाए।
तो ये पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आए दिन जो ये इसी प्रकार औद्योगिकरण और संसाधनों का दोहन होता रहता है, उससे यह इसलिए कहा गया, स्टीफन हॉकिंस ने जो कहा कि इतनी गैसें पैदा होंगी, जहरीली गैसें, जो आदमी को जीवित रखने के लिए बहुत ही कठिन होंगी। गांधी जी ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, उसको मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की जरूरत पूरा करने के लिए सफिशिएंट संसाधन है, लेकिन आदमी की ग्रीड पूरा करने के लिए नहीं है। हमको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी जो लोभ और लालच और ग्रीड है वो तो नुकसान हमको करता ही है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो हम मानव जाति को नुकसान पहुंचाने की चीज दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वह भी प्रभावित करता है। इसका एक ही मात्र जो सुझाव हमने बताया, चाहे उसको हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी नाम दें या हम धार्मिक स्तर पर उसको कसायों के रूप में, लोभ के रूप में देखें, तो तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। इसके साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर अनिल जी, आपने स्पष्ट शब्दों में बहुत सूक्ष्म और सरल भाषा में हमें बताया है। जहां तक कि अगर समाप्त करें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट्स व्हाट द मेन रीजंस। और जो आपने उपाय बताया, उसमें हमें जो सोचने की जरूरत है, जैसे कि मैं अपने मेडिकल टर्म में भी कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मतलब हम कंपेयर करते हैं। मैं अपने आप में असंतुष्ट नहीं हूं, पर मैं नवलखा जी से या अनिल जी से शायद मैं असंतुष्ट हूं, क्योंकि मैं उनको देखकर सोचता हूं कि मेरे में ये कमी है, और उस कमी को पार करने के लिए मैं अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, और उसमें जनरली फेल होता हूं या फाउल करता हूं। तो ये आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें लाभान्वित किया। हमारे दूसरे वक्ता श्री कमल जी नवलखा कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं। आप बॉम्बे बेस्ड सीए हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें बताएं कि अपरिग्रह से लोभ या ग्रीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, या कैसे उसका निवारण या कारण हो सकता है। श्री कमल जी नवलखा, अनम्यूट करिएगा प्लीज, आप अनम्यूट करिएगा। हाँ, धन्यवाद। Thank you, sir. Am I audible? Yes. बिल्कुल। Yeah. Thank you for inviting me for this wonderful talk, which is part of my studies on my research program at the moment. Honorable Professor Mahendrakumar, respected VC sir, Sancheti Saab, the learned audience, including Bhandari Saab, is also here. It is very nice to talk in the august presence of such scholars. I am thankful for giving me this opportunity. But before I begin my talk on to discuss the just concluded details on the emotion called greed, I liked one word that Sancheti Saab used at the beginning remark, is called, it is a beautiful word. The greed he called beautiful, but he attached a condition to it. It has to be balanced. So that is a very big condition, and that is where the subject of Aparigraha will come into play, and let us see how it helps. It is that lobe or lalach, as has already been captioned in our discussion today this morning, is an internal passion. The most powerful for kasais, the anger, conceit, greed, and deceit. Infatuation, no regard for any wrong or right. When there is attachment to possession, there can never be patience, penance, nor control over the senses, nor over any of the prescribed rules therein. The instinct of greed, and I quote from Uttaradhyan, is extremely intense. Even if some power were to give the entire universe full of riches to any person, the recipient will still not be satisfied with this. The human skull is so inordinately insatiated, that it always remains unfulfilled of the desires. The desire for possessiveness, that is parigraha, is dangerous. I call it dangerous because this is the harboring point for
greed. The root cause of all evils is greed. Is so powerful that for emancipation, greed is the last of the passions to get annihilated. According to Thanam, out of the 4 subdivisions of greed, Anantanubandhi, the cause of endless transmigration, Apratyakhana Varan, the cause of non-renunciation, Pratyakhana Varan, the cause of partial renunciation, and Sanjwalan, that is the flaming up. The last to dilute is Sanjwalan Lobh, which is a minuscule trace of greed. In order to attain what we all want is a liberation. At the time of rising of Sanjwalan Kasai, the state of Vitaragata, it cannot be attained, So by its very nature, let us understand man is greedy. We all accept it. He seeks a lot. He wants to work unmindfully, even and tirelessly, just to make lots of money. And this instinct leads to crime, only to make enormous money without the need for it, or caring for the purity of means. The main culprit for creation of violence or inequality is the instinct of over-greediness in human mind. This tendency has given new dimension to the entire theory of crime. The person who overcomes the mind for possessiveness, that is the infatuation, abandons possessiveness in reality. Due to mindness, the path becomes perverse, as also the knowledge. On the dissolution of this note alone, one can achieve the right intuition and knowledge. Individual ownership rides on a strong current of possessions, but this feeling becomes weak in group ownership or state ownership. There is a strong connection between ownership and violence. When the question of possession exists, there is a strong attraction to amass wealth, and where the tendency to hoard wealth exists, there is use of excessive force. Greed is a kind of passion of possessiveness. The sensuous subjects are mainly the cause of greed, and the basic source of greed is the sensual object, and this is what is taken from the Acharang Bhashyam. On the basis of factual elucidation, the greed gets the status of that magician called Indrajalik, which can create all sorts of delusion in human mind, ultimately forcing the person to run after accumulation of riches beyond reality. And this is exactly the main culprit in creating the dreadful scenario all over the world, wherein people, right from a sovereign to a pauper, there is no exception, go on hankering for accomplishing the conquest for pinnacle of financial prosperity. Let us see how greed is responsible for contemporary economic problems. At the present juncture, the mankind is passing through turmoil and facing crisis which is manifold. Humanity is stationed at a crossroad. We all know this, And on the one hand, there are marvels of science and technology, while on the other, there are value erosions, moral degeneration, and various types of deprivations. Although the economic problems differ between various geographies, lifestyles, environment, earning capabilities, political goals, and other causes, at present context, such economic problems are broadly discussed at 4 major layers. And I touch the individual. The attachment to money is nothing but a disguised form of greed. I tell you, money is a unique discovery. I repeat, unique discovery, because this is the most trusted material to test human nature and the intensity of greediness. As far as society is concerned, greed causes disparity and extortion in this society. Class wars are direct contributors to social unrest. As far as national level is concerned, terrorism, rebellion, political based on threats, unhealthy competitions, monopolistic expansions have origins again on greed. So, and finally on global level, I have observed that the wars, the economic competitions, the corporate dominations, exploitations, weaker countries spying, cross-border rebellion,
are all form of greed at their own level. So spiritualism in general and Jainism in particular advocate non-violence, self-restraint, austerity, renunciation of external possessions, content of the greed based on desires, and also the greed are the root causes of indulgence. And last but not the least, they go to the extent of giving up all worldly pleasures and become ascetic to fulfill the summum bonum of life. This is the Jainism advocacy. Let us see how Aparigraha is not identical with the Ichha Pariman. There are two words, Aparigraha and Ichha Pariman. Aparigraha Mahavira is the fifth great vow of non-possessiveness, whereas Ichha Pariman is the fifth vow of the lay followers, in which he puts voluntary restrictions upon his desires for possessions. So there is a difference between the two. People, Jain religion recognizes the role of material possessions as merely temporary means to sustain the body to the necessary degree during the finite physical life. It emphasizes that we are not the owner of wealth, but merely trustees, as already has been explained by the previous speaker, who should use the wealth to help those in need instead of hoarding and spending lavishly. Material possessions should not become the end goal of life. When people form attachment to wealth, then underlying attachment are only a distraction to our spiritual growth. The Jain canonical text Thanam also mentions clearly two separate vows for the ascetic and the lay followers, calling them Aparigraha Mahavrat and Ichha Pariman Anubrat. The first term, Sabho Parigaho Veramanam, means abstinence from total possessions. Substantially, all substances, especially those which are in the entire universe, temporally those produced in night, etc., and emotionally those which are one has attachment or aversion. This is based on the Dravya, Kshetra, Kal and Bhav. The second term, Ichha Pariman, means abstinence from partial possessions through exercising voluntary restrictions on the desires for accumulations of money, etc. In common parlance, sometimes people talk of Aparigraha even for lay followers. But in reality, the fifth Anubrat is called voluntary restriction put on desires for possession. It is evident that total relinquishment of possession is meant for the ascetics only, where the lay followers only restrict their desires for possession and not renounce possessions in toto. Now, I would like to talk on the Ichha Pariman that is prescribed for the ladies. Ichha Pariman means limits to having. It gets absolutely to the heart of the dilemma that we face today. So many of our environmental problems, so many of unhappiness, even in the prosperous parts of the world, including America, are all caused indeed by wanting to have more and much more. Or at the heart of the modern economics, the subject of consumerism is all pervasive, encouraging people to believe that having more is the only way to happiness, and that greed is a virtue rather than an evil. Therefore, Aparigraha, a discipline which leads to some sort of restraint over demanding things, is crucial, since it helps one first to shed external possessions, which leads to the detachment of non-possession. The danger of consumerism is looming large and should not be allowed to dominate our lives as such. It is known to be something which is never satisfied, and consequently the lack of satisfaction leads to an inner emptiness. The concept of consumerism has to be discarded and Ichha Pariman be established as a correct solution to the correct economic problems. And that is the subject of our discussion now, that are getting increasingly difficult, I tell you. Like asana and pranayam are the best medicine for physical fitness of the body. Similarly, Ichha Pariman, I found out, is the best medicine for social fitness of the individual. The famous saying of the great moral leader Mahatma Gandhi that has already been quoted is that there is enough on earth for everyone's need, but not enough for even one man's greed. Gandhi said that the mother nature has provided resources that are sufficient for everyone,
But people, because of their longing, are trying to keep a lot more than what is required. Bhagavan Mahavira usually proclaims that profit breeds greed. As profit increases, greed too. No sooner than one need is fulfilled squarely, scores of others are born. Even economists recognize that wants are essentially bottomless pit, which can never be filled. This, however, makes human life entirely topsy-turvy. It is a general human psychology that more the gains, more the greed. In the Uttaraden Sutra, it is said, Jaha laho taha loho, laha loho pavadhai. There is no end to these desires. There is greed in proportion to the gain. The greed increases along with the gain. The more you get, the more you want. Desires are endless like the sky. And therefore it is rightly said, Ichchahu agasa sama anamtiya. And therefore, let us understand what the Jain theory of limitation of desires and possessions, Ichcha Pariman and Parimit Parigraha, can help in defining the use of resources for one's basic needs. Jain text gives a detailed account of this control in terms of Anubrat, for imposing self-control on the use of resources for self-consumption. Anubrat explains the direction of needs. Their aim of the action is to discreetly control one's limitless desires and possessions, which are put them in the endless race of activities. For example, Anand was the first Jain Shravak to take on the 12 vows meant for lay people from Mahavir Swami when he was the richest person at that time. He then limited his possessions and refrained from expanding his unnecessary businesses. Let us now see how Aparigraha leads to renunciation. In Jain religion, the word parigraha means to crave, seek, or to collect material possessions. The Mahabharata of Aparigraha called non-attachment of non-possessiveness. Attachment is considered an obstacle to spiritual liberation because the excessive pursuit of material possessions leads to the desire to own such objects and insatiable greed for acquiring more. Aparigraha, that is Sarva Parigraha Viraman, refers to the renunciation of Parigraha for the whole life through 3 karan: commit oneself, make others commit, and approve of commission by others. And 3 yoga, activities of mind, speech, and body. Aparigraha means not including non-attachment. It denotes restraint on materialistic possessions and consumption. But the essence lies in detachment of every sphere of life. Aparigraha does not imply negation of life. It never does. It means being an essentialist. And Aparigraha means not to develop attachment of any physical thing and never to crave for possessing it exclusively for oneself. Aparigraha is parcel of virtue of ahimsa. Now let us see how excessive desires is the cobweb. To prove this point, I am quoting excerpts from the Great Indian Dream by management experts Malay Chaudhary and Arindam Chaudhary, which is very relevant. And he says, a man is in quest for more, just moves forward. In his chase for more, one day he becomes the richest man in the universe. He realizes that there was no way to maintain a stable position in the market economy. One can either go ahead or be gobbled by someone else. The only way to remain where you are is to run faster than one behind you. Till the man becomes the richest person, he has somebody to catch up with. But after becoming so himself, the richest man, he has to keep running for more without any aim or anyone to catch up with. It is an aimless end and blind chase after the unknown and unhappiness. That is the hiding somewhere behind the clouds, ever elusive. In this context, the philosophy of Mahavira, let us understand, who's centered around the inner development of the spiritual power to curb the unending desires through the practice of renunciation by self-discipline,
play a vital role in resolving all the evils without using any coercion or external pressure. The biochemical and neurological explanation of greed, I would like to hear from Professor Mahendrakumar ji himself. But you know, as far as my study goes, that even the modern trend in the field of biological researches have made it amply clear that most fundamental biochemical mechanism of human body, called endocrine system, involves intimately and inherently the invention of the consciousness in each and every mental and emotional process. It means that the prime factors which play a role of villain in creating problems such as excessive greed, desires, in evolving humanistic economics could be addressed powerfully through the application of spiritual techniques based on the development of human consciousness. The need to evolve sure and secure remedies to purge the human brain from the dominance of the animal brain, that is the limbic system, over the truly human brain, that is the neocortex, and ultimately get success in establishing a truly peaceful world order based on the principal triplet of Jain darshan, that is ahimsa, aparigraha, and rather I would call ichha pariman in this context, and of course the anekantvad, which would be permanently sustainable. What is the humanistic approach? The humanistic approach is real happiness. The concept of relative economics lays emphasis on self-restraint, truth, and other virtues. The necessity is to totally abolish the weakness of the present-day capitalism-based demonic economics, which is solely responsible for the ever-increasing ditch between the haves and have-nots, and humanistic economics, which stands on the pillars of universal compassion, karuna, collective friendliness, contentment, selflessness, altruism, consideration, and above the spiritual principle of anukampa, which is one of the characteristics enlightening the world viewer, samyak drishti, that is samvek, nirved, anukampa, astikyani. This is the main principle behind the Jain theory. The mythological story of King Midas, we are all aware, is about the blessing obtained by insistence. He wanted it, that everything he touched would turn into gold. And this is a pointer that whenever true happiness is not recognized, the boon could become a curse. The greed invites us to think and realize the consequences that may lead us to become the slaves of our own desires. And another 3 minutes and I should conclude that the spiritual technology, which is helpful in attaining holistic health, inner peace of mind, and lasting ecstasy in life, is a course prescribed which not only includes everything suggested in the doctrine of minimalism, but also pave the way to reduce the charge between the haves and have-nots. It is also helping in developing the high virtues of universal compassion, as we have already discussed, and the amity in the hearts of people, especially those who belong to the affluent class and indirectly are the ones responsible for major cause of disparity in the society. I would leave this to Professor Mahendrakumar ji, who would be talking in the later session on how spiritual technology can control the instinct of greed. Now, just the resolution of greed through Aparigraha and Ichha Pariban. There is a saying in Dasvayaliyam, which I quote, Uva samena hane koham manam maddavayajine mayang chajjava bhaveda lobham santoso jine. And the Jain text elucidates the path of freedom from the passions. And it says, eradicate anger through the practice of forgiveness, conquer pride by exercising humility, vanquish deceit by means of guilelessness, and of course the subject for this morning, surmount greed through none other but than the power of contentment. Mahavira essentially was a spiritualistic philosopher. In his view, summum bonum of life is emancipation or moksha. Hence,
the principal code of conduct. He prescribed the course of observation of the five great vows. On the other hand, he had prescribed a subsidiary code of conduct apart from the five great vows of non-violence, truth, non-stealing, celibacy, and non-possessiveness. But for the subsidiary code of conduct, the five great vows are substituted by the five anubratas. In this context, the fifth anubrata was not aparigraha, non-possessiveness, that we have already seen, but sthul ichha pariman, which is defined as the vow of the lay follower, in which he puts voluntary restrictions upon his desire for possessions. The Jain canonical literatures are abundant with the basic behavioral concepts like ahimsa, acha pariman, aparigraha, asteya, adattadan, aparimat, apramat, the satya, yatha sambhivag, visarjan, santosh, etc. And the list goes on. Now, let me just conclude. Greed is an attribute or a state of psyche. Non-greed is also an attribute of the psyche. With the progress in the practice of the state of non-greed, the state of greed is gradually weakened and finally overcome. Hence, the person who can resist greed by means of non-greed is capable of saving himself. And Acharang's Bhashyam also confirms this. Though all the 12 anubratas are roadmap to this path of sustainability, but two vows known as parigraha, pariman, and bhogopabhog parima, these are the perfect antidote to the culture of consumerism. Only two small vows can be practiced by all the people. The eco-sustainability of the future can be ensured. Need, greed, desires has been a basic human instinct that only when regulated together can bring peace. The human-centric economic development is more relevant than only the money-centric economics. Going beyond, when all species of living creatures on this planet are satisfied, then only the real growth can be admitted as sustainable and sufficient. And I really thank you for your kind attention. I think exceeded by a few minutes, but I'm open to any questions in respect of the topic discussed. With this, I thank you very much. Om Aram. Excellent, sir. Thank you very much for the nice deliberations, giving us the total outlook about the Aparigraha and how it can be controlled with the control the greed. That's the main message, was to limit the desire. Now we proceed further. We are privileged to have Muni Abhijt Kumar Ji, highly knowledgeable, who will be taking us to the journey how to tame this destructive emotion called greed. Muni Abhijt Kumar Ji. Prasannatma Diksha Nayanamavataram Nayatumi. I pay my obeisance to all the enlightened souls, the aspirations for the spiritual journey, all the respected, esteemed scientists, scholars present here today, and the most adorable Munishri, the privilege we have of his Sanidhya. Today, we are going to embark upon a journey of need and greed factor. Today, we had a good discussion, and we have been listening to Anilkumar Jain from Jaipur, Kamal Naulakha, and all the knowledgeable scholars here, especially Pratap Sanchetti, Supriya ji, and all. And today's journey is on emotion that every human, or even every human being, every living being even possesses, that is greed. As per Jain's philosophy, greed is the deepest emotion every individual possesses. In the journey of spirituality, when one rises high is consciousness, with the awakening and heightening consciousness, it is the last desire which he gets rid of.
He can get rid of anger, ego, and even the deceit factor, but it is very difficult to be free from the greed factor. Greed factor is explained as lobe. The technical term is lobe. Lobe can be seen with two connotations. One is the greed factor कि और चाहिए never ending desires. और दूसरी तरफ है deep material attachment, deep clinging and craving to that. वो जो clinging and craving है उसके पीछे है संस्कार. As we have this sanskar of that possession, feeling that it is mine, it is me and mine, ये जो इमोशन है ये एक महीने से नहीं है, एक साल से नहीं है. अगर एक वस्तु आपके पास है तो इम्पोर्टेंट है कि हम उन सब चीजों को जीवन में समझिए कि वो क्यों आए हैं और कब से आए हैं. तो हमारे अंदर कोई व्यक्ति आया है एक महीने पहले, उससे हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी, और जो हमें 2 साल पहले मिला था उससे बॉन्डिंग थोड़ी और डीप हो सकती है. अगर एक व्यक्ति की शादी 10 साल पहले हुई तो 10 साल से उनका साथ है, और माता पिता साथ जन्म से, मतलब 40 साल का बॉन्डिंग. पर जो बॉन्डिंग ऐसा है जो इस लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, इस लाइफ में है, पिछली लाइफ में भी, उसके पहले की लाइफ में था, मतलब उसका जो अटैचमेंट का ड्यूरेशन कितना है, 1000 साल, किसी का 10,000 साल, किसी का 1,00,000 साल, किसी का 1 करोड़ साल. तो उसका जो अटैचमेंट, जो डेप्थ है, जो साथ में एक फीलिंग है एक अपने अंदर होने की, वो 1000 साल, 10,000 साल, 10,00,000 साल तक सीमित नहीं है, वो है करोड़ों अरबों वर्षों से. और उसको आगे जाके कहते हैं अनादिकाल, फ्रॉम टाइमलेस बिगिनिंग, बिगिनिंगलेस टाइम. अगर वो जो हमारा बॉन्ड है पुद्गल के साथ, तो जैनिज्म में एक पावरफुल वर्ड है पुद्गल. पुद्गल मीन्स एवरी मैटर, even the physical body we have, even the clothing we have, even the possessions we may have, house or anything we have, even the body itself is a possession there. ये सारे जो पोजीशन है उससे हमारा जो बॉन्ड है, साथ है हमारा, वो 1000 लाख करोड़ अरब साल एक काउंटेबल नंबर तक नहीं है, वो इनफाइनाइट टाइम से है, बिगिनिंगलेस टाइम से है. तो उससे हमारा जो अटैचमेंट और पॉजिटिवनेस जो है वो इतनी डीप हो चुकी है कि मैं उसे माइन नहीं समझता हूँ, मेरा है नहीं, मैं समझता हूँ वो मैं ही हूँ. डिफरेंस ये है कि मेरा होता तो फिर ठीक है, मेरा है कभी वो तेरा है, मेरा है कभी वो छूट भी जाएगा, पर वो मैं ही हूँ. वी आर आइडेंटिफाइंग इट आवरसेल्फ. हमें समझता है कि शरीर मैं हूँ, ये नाम मैं हूँ. अरे मुझे नाम दिया गया है, पहले मैं बिना नाम के भी था, मेरा जन्म हुआ, अब पिछले पहले 28 दिन तक मुझे कोई नाम भी नहीं मिला. 28 दिन मुझे बाद नाम मिला, किसी को 6 महीने बाद नाम मिला. तब तक क्या था वो, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता था? वो एग्जिस्ट करता था. मतलब नाम इज एन एडिशनल थिंग टू अस, इट इज अवर नेम, बट मी माई सेल्फ इज नॉट द नेम. तो मैं और नाम अलग है, नाम मुझसे आके जुड़ा है, कभी अलग भी हो पाएगा. अगर मैं ये मानने लग जाऊं कि शरीर भी मुझे मिला है, एक दिन छूट भी जाएगा, तो मुझे दुख नहीं होगा. ये रिलेशन मेरा आज बना है, कभी टूट भी जाएगा, कभी छूट भी जाएगा. वैसे ये मनी है मुझे मिली है, वो आई है तो जा सकती है, पर जो कभी आया नहीं है वो कभी जाएगा नहीं. तो आई हैव टू बी फियरलेस कि मेरी जो स्पिरिट है वो मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता. नॉलेज इज माई इंट्रिंसिक वर्च्यू, वो मुझे कोई ले नहीं सकता. तो मैं एक बहुत कॉशियस होना कि जब हम ग्रीड वर्ड यूज करते हैं, तो कोई कहता है कि महाराज इनको भी मोक्ष का ग्रीड है कि मुझे और अपग्रेड करना, मोक्ष तक जाना. तो वो ग्रीड नहीं है. ग्रीड इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ फिजिकल थिंग विच इज एक्चुअली नॉट आर्स. जो हमारा नहीं है हम उसको चाहते हैं, वहां पे ग्रीड की बात है. जो हमारा है उसमें ग्रीड की बात नहीं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी क्वालिटी है, हमारा इंट्रिंसिक वर्च्यू है. उसको हमें किसी से लेना और छोड़ने की बात ही नहीं है, वो तो हम ही है. तो हमें ये समझना है कि मैं कौन हूं और मेरे साथ कौन. तो अगर हम ये दो वर्ड्स को यूज करना सीख जाए कि मैं, मेरा और मेरे साथ, तीन अलग शब्द हो गए. एक मैं मतलब मैं स्पिरिट हूं, मेरा मतलब मेरे साथ जुड़ी हुई चीजें, और मेरे साथ ये एक और पॉजिटिव टोन हो गया. अगर मैं मेरी चीजों को मेरे साथ रहने वाली चीज कहने लग जाऊं,
Instead of saying it is my laptop, it is my hands, it is my mouthpiece, it is my head, इसकी जगह मैं अगर ये यूज करने लग जाऊं कि ये मेरे साथ है, दिस इज accompanying me, मतलब आज ये जो पेन है ना मेरे पास, वो मेरा नहीं है, आज वो मेरे साथ है, मेरे साथ है, कभी मेरे साथ नहीं भी रहेगा, कभी टूट भी जाएगा, तो मुझे दुख नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट उस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेकअप करना सीख जाऊं तो मेरे दुख को मैं समाप्त कर दूंगा। केवल मेरी वो पॉजिटिवनेस नहीं टूट रही, पॉजिटिवनेस के साथ मेरी जो मिजरी है, मेरी जो प्रॉब्लम्स की रूट है, वो भी छूट जाएगी। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए। एज ए ह्यूमन, एज ए लिविंग बीइंग, वी ऑल आर इन सर्च ऑफ सॉल्यूशंस। वी कम टू स्पिरिचुअलिटी फॉर सॉल्यूशंस। और ये जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी में, वो ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं, मेरे साथ है, बस इतना ही उसका साथ है। तो एनीथिंग विच इज विथ मी इज प्रोविजनल, इट इज नॉट परमानेंट। तो परमानेंट नहीं है, प्रोविजनल है। प्रोविजनल है तो वो आई है, कभी चली जाएगी। अगर मैं ये समझ जाऊंगा तो उसके जाने का मुझे कोई गम नहीं होगा, आने के लिए मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात को रखता हूँ, जो कई बार बड़े महाराज भी कई बार फरमाते हैं। एक किसान बहुत गरीब था, हालात का मारा था, बहुत परेशान था। उसको एक स्पेशल ऑफर दिया गया कि तुम चाहते हो, तुम अपने आप को गरीब कहते हो, परेशान कहते हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, हम तुम्हें ग्रांट करते हैं, आज तुम्हें ये सनराइज टू सनसेट का टाइम दिया जाता है। इतने में तुम जितना लैंडस्केप क्रॉस करके आओगे, ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट और ये तुम्हारा एंड पॉइंट होगा। तुम घूमते घूमते जितनी धरती, जितनी पृथ्वी के लैंड को तुम क्रॉस करके ले आओगे, उतना लैंड तुम्हें गिफ्ट कर दिया जाएगा। हमेशा के लिए तुम्हारी गरीबी समाप्त। पर यदि तुम किसी भी कारण से सनसेट तक, स्टार्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। केवल 6 फीट 6 इंटू 2, 2 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई जितनी जगह मिलेगी। तुम्हारी जो इतनी बड़ी जमीन है 3 एकड़ की, वो भी हम जब्त कर लेंगे। यू विल बी इवन डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड यू ऑलरेडी possess टुडे। तो बोला यार ठीक है भाई, 3 एकड़ तो क्या बड़ी चीज है, 3 एकड़ तो बहुत छोटी लैंड है, और मैं तो भाई 200 300 400 एकड़ क्रॉस कर सकता हूँ, और मैं तो भाई भागने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, और इनको पता नहीं मेरी फिजिकल फिटनेस, मेरे को तो जिमिंग हो, स्विमिंग हो, मुझे सब आता है, और रनिंग में तो मैं बहुत फास्ट हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत खेल खेले हैं इसके, तो मैं तो दौड़ के पार कर सकता हूँ। तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्टेड, और रिटर्न कमिटमेंट भी दे दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। और वो सनराइज के पहले, पिछली रात को उसको नींद नहीं आ रही है, अब वो सोच रहा है कौन से एरिया में जाऊं, कौन से खेत को कवर करना है, क्योंकि तो ये जामुन का खेत अलग है, ये आम का अलग है, और ये गन्ने का तो बहुत बड़ा है। ऐसे सब लैंड्स को मैं अगर लेते जाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है। आज तो मैं माला माल होने वाला। तो पूरी रात वो चिंतन करता है, सनराइज हुआ नहीं हुआ, और वो एकदम चालू है, तैयार है दौड़ने के लिए। जैसे सनराइज का हुआ कि सूर्य उग गया है, और बस वो दौड़ना शुरू कर देता है, वो भागम भाग शुरू करता है। खाना पीना जो भी था वो अपने पास उसने बंडल कपड़े में बांधे हुए थे, और वो दौड़ना शुरू करता है बस, और तेजी से दौड़ता है। सुबह 6 बजे शुरू किया, सुबह 10 11 बजे तक नॉन स्टॉप सीधी दिशा में भागता गया। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बोले भागो बस, आज तो भागने का दिन है, जितना भागेंगे उतना पाएंगे। वो दौड़ते जाता है, और अब 11 बजे से सोचा कि अब टाइम आ गया राइट टर्न लेने का। उतने में सोचा कि देखो एक गन्ने का खेत अब केवल 300 मीटर आगे, और ये खेत ये 10 एकड़ तक चौड़ा है, लंबा चौड़ा है। इसको अगर मैंने कवर कर लिया तो लाखों के बारे न्यारे हो जाए। ये थोड़ा सा बोला थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, और 300 मीटर का वाला वो खेत भी ले लेते। उतने में गया, उतने में उसे देखा इसमें तो आगे वाले खेत में तो बनाना लगे हुए और नारियल के पेड़ भी, और इतने सारा इतना रमणीय खेत है, इसको अगर ले लिया तो एकदम मतलब होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। तो चलो वही थोड़ा इसको भी ले लेते हैं। करते करते 1 2 3 4 खेत ऐसे क्रॉस करते जाता है, उतने में दोपहर की 1 बज जाती। अभी तक उसने क्या है, एक लीनियर डायरेक्शन में एरिया कवर किया। अब जैसे लीनियर में अगर मैं लौट गया तो मुझे कितना मिलेगा, इतना सा लैंड मिलेगा, लंबा तो बहुत है पर इतना सा स्पेस मिलेगा। तो मुझे ऐसे भी कवर करना हो तो एरिया मिलेगा। अभी तो एक लाइन खींची मैंने, तो एरिया के लिए ऐसे भी एक क्रॉस लगाना पड़ेगा।
तो 1 बजे टर्न लेता है और अब इधर भागना शुरू कर, भागता है भागता है भागता है, तो गन्ने का खेत पार कर लिया, आम का कर लिया, ये संतरा भी मिल गया, जामुन भी मिल गया, अरे ये तो नारियल के वृक्ष तो हैं, तो साथ में चीकू के भी पौधे लगे हैं, ये तो अरे ये तो बहुत अच्छा है, और जामुन तो इतने सुंदर आए हैं इस बार, इसको तो कवर हमें कर लेना चाहिए। तो मैं जैसे जितना ये स्पेस कवर करूंगा वो तो सारा लैंड मेरा डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं 1 किलोमीटर आगे भागूंगा तो मेरा पूरा जो ये लैंड है वो 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका तो बहुत अलग आनंद है। तो वो दौड़ते जाता है, एक एक करके क्रॉस करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। शाम की 4 बजने आ गई, भूख है, प्यास है, तो वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता है। बोले खाने पीने में कोई जमाना निकल जाएगा ऐसे, खाना पीना तो कितना ही करते हैं अपने, एक दिन व्रत हो जाएगा, क्या है, खाना पीना छोड़ो, अभी तो दौड़ो और जितना कर सकते कर लो। वो दौड़ते जाता है और 400-500 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे स्क्वायर में वो क्रॉस कर देता है। तो शाम की 5 बजने आ गई, तो उसने अब तो मैंने बहुत कवर कर लिया है, पर अब मैंने ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया, अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो खाली ट्रायंगल मिलेगा, ऐसे खींच के जाऊंगा तो पूरा स्क्वायर मिलेगा। तो अभी भी मौका है, पर अभी 5 बज गई है, अब केवल 1-1.5 घंटे का टाइम है, 6:30 बजे सनसेट होने वाला है, दौड़ो। वो तेजी से दौड़ता है, अब देखता है अब तो केवल आधा घंटा बचा है और अभी तक तो मैं ऐसे ही कवर कर रहा हूँ, ऐसे तो बाकी है। तो उसने बीच में ट्रायंगल लिया और बोले अब भागो, बस पहुंचना है, फुल स्पीड। अब बस इधर सन भाग रहा है नीचे की तरफ, इधर वो भाग रहा है, क्या वो पहुंच पाएगा? सोचा बहुत, दौड़ा बहुत, बहुत तेजी से भाग रहा है, उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज हो चुकी है, 60, 70, 80 और 100 तक लिमिटेड नहीं है, 140, 150 तक चली गई है, हार्ट बीट्स बहुत तेज है। पर अब रुकने का टाइम नहीं है, पसीना पोंछने का समय नहीं है, पानी पीने का समय नहीं है, डिहाइड्रेशन भयंकर हो गया है, भयंकर भूख लग चुकी है, भयंकर परेशानी हो रही है, पर वो दौड़ता जा रहा है, तो वो पूरी एनर्जी के साथ दौड़ता है। पर ये 10 किलोमीटर का फासला और ये आधे घंटे का समय, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टारगेट था। वो भागता है भागता है भागता है, फुल बुलेट ट्रेन अपनी दौड़ा देता है, पर कुछ फासले से पहले सूर्य अस्त को 2 मिनट बाकी थे और उसको पैर अटका और धड़ाम से गिरा। उसका हार्ट इतना प्रेशराइज्ड था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, उसका लाइफ वहीं अटक गया। न वो सूर्य अस्त देख पाया, न अपने उस किनारे तक पहुंच पाया। उसे मिला तो आखिर क्या? वो 6 फीट की जगह उसे मिली गई। उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया कि बहुत दौड़ा, बहुत कुछ पार किया, पर इसके परिवार को भी हम कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसने अपनी शर्त को पूरा नहीं किया। तो ही डाइड इन द सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन। तो हमें सोचना है हमारी लाइफ अकम्प्लिशर वाली लाइफ हो या इनकम्प्लीटनेस वाली लाइफ हो, हमें सोचना है। आज उसकी दौड़ पूरी नहीं हुई, क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो बुद्धिशाली नहीं था? क्या उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी? उसने प्लानिंग भी की थी, उसकी फिजिकल पावर भी थी, उसके मेंटल पावर भी थी, तो वो वीक कहाँ था? इमोशनल पावर में। वो समझता था, गणित उसके पास था कि 11 बजे तक दौड़ूंगा या 2 बजे तक दौड़ूंगा या 4 बजे तक दौड़ूंगा और यहाँ पे मुझे 6:30 की जगह 5:45, 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। ये उसकी सोच, प्लानिंग बहुत पावरफुल थी, पर ये ग्रीड उसे रोक नहीं पाया। उस ग्रीड को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उस ग्रीड के कारण वो अपनी डीड को परफॉर्म नहीं कर पाया, अपनी बात को फीड नहीं कर पाया, अपनी नीड को कंप्लीट नहीं कर पाया। उसने गिव अप हो गया, तो लाइफ के लिए हमेशा के लिए चला गया। हमें सोचना है कहीं हम भी उस रेस में तो नहीं। वो रेस केवल पैसे की या प्रॉपर्टी की नहीं है, केवल नाम और शोहरत की नहीं होती है, केवल अपनी कला और अपनी प्रसिद्धि की नहीं होती है। कई तरह की ग्रीड्स हमारी लाइफ में हो सकती है। हमें समझना है कि हमारे इमोशन को हम कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इमोशन को हम अगर चैनलाइज करना सीख जाए तो हम हर स्टेप पर हमारा प्रमोशन होगा। हमें उस ग्रीड को चैनल करना है। हम कोई भी कार्य करें, एक सिंपल टूल हम यूज कर सकते हैं। डू आई वॉन्ट इट, डू आई नीड इट, डू आई वॉन्ट इट, डू आई नीड इट। केवल एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि मुझे ये मेरी इच्छा कह रही है या मेरी जरूरत है। जैसे ही आप देखेंगे मेरी जरूरत है,
उसे पूरा करना बहुत इजी है, और मेरी इच्छा है तो वो इच्छा अनंत है। जैसा प्रभु महावीर ने कहा, इच्छा हु आगास समा अनंतिया। इट्स इनफाइनाइट, desires are infinite like the sky. It's an open expanse, never ending. So let's not extend to that over expanding, never ending desires. Let's inspire ourselves to feed the need. Let's recognize and realize what are actual needs. और साधक वो होता है धीरे धीरे अपने नीड्स को भी मिनिमाइज करता है, मिनिमलाइजेशन करता है। एक गृहस्थ है जो 100 साड़ी तक एक महिला लिमिट करती है, एक साधक है जो 20 साड़ीज तक लाता है, एक साध्वी होती है 3, 4, 5 साड़ीज तक अपने आप को ले आती है कि ओनली 5 वेयरिंग्स, दैट्स इट। वो साधना का लेवल है। हमें उस साधना के लेवल पर अपने नीड को भी कंट्रोल और चैनल करना है। पर नीड की बात तो छोड़े, पर एटलीस्ट हम डिमांड से नीड पर आ जाए, वांट से नीड की तरफ शिफ्ट करें। हम जब भी शॉपिंग पर जा रहे हैं, जब भी ड्राइविंग कर रहे हैं, जब भी कुछ परचेज कर रहे हैं, जब भी कुछ अपने साथ लेने जा रहे हैं, मतलब फ्री में मिल रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए ये मेरी जरूरत है या नहीं। जरूरत है तो जरूर, और जरूरत नहीं तो फिर क्यों। तो हम इस तरह से अपने आप को अनलोड कर पाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर पाएंगे, एंड वी कैन गेट रिड ऑफ द डेंजरस पावरफुल ग्रीड इमोशन। इस ग्रीड इमोशन को हम कॉन्कर कर पाए। आप सबके प्रति एक मंगल भावना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, और उसके लिए हमें डिटैचमेंट का प्रयोग करना है। जो भी चीज मेरे साथ है, मुझे ये सोचना है ये मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरी नहीं। अगर आप अपने बच्चों के प्रति ये सोचने लग जाएंगे मेरे साथ है, और एक मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो आप पॉजिटिव बन पाओगे, पॉजिटिव बन जाओगे, ओवर कंट्रोलिंग नेचर हो जाएगा, उसके लिए आप परेशानी का कारण बन जाओगे। पर अगर आप ये सोचते हैं ये मेरे साथ है, just treat him even though it is your own kid, just behave as it is just with you, not of you। अगर आप ये सोचने लग जाओ कि मेरे साथ है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे पास है, तो अपने आसपास वालों को हम थोड़ा बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम उन्हें रोकते टोकते नहीं, हम उनकी इंडिपेंडेंस की हानि नहीं करते हैं, उनको खाली मैनेज करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इंसिस्ट और रेसिस्ट नहीं करते हैं। हम कंसिस्टेंट कनेक्शन को मेंटेन कर पाते हैं अपनी क्लैरिटी, अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा। तो वो अपनी फैमिली रिलेशंस में भी, अपने पोजीशंस में भी, अपनी चीजों में भी अगर ये सोचने लग जाए कि जमीन मेरी नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास है, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। केवल इतना सा एक प्रयोग करके देखिए, इंस्टेड ऑफ मी एंड माइन, सी दैट मी एंड विथ मी, मी एंड विथ मी, नॉट मी एंड माइन। माइन विल नॉट शाइन, but me and with me will always be with the positivity। तो हम ये छोटा सा प्रयोग करें, कुछ भी खरीदने से पहले नीड और वांट का क्वेश्चन करें, और कोई भी चीज के प्रति लगाव जब जुड़ जाता है ये सोचिए कि मेरा नहीं है, ये मेरे साथ है। ये 2 सूत्र हम जीवन में जीने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आज का जो ये प्रोग्राम है, जो आप जैसे स्पेशल लोग आज इस स्पेशल सैटरडे पर अपने स्पिरिचुअलिटी के सेशन में जुड़े हैं, और फिलॉसफी और साइंस के डिस्कशन के अंतर्गत जो ये चीजें निकलने वाली है, उनको हम जीने का भी प्रयास करें। जानना जितना जरूरी है, जीना भी उतना ही जरूरी है। जो जानेगा भी, जिएगा भी, वो निश्चित रूप से जीतेगा भी। तो हमें जीतना है, हमें उस इमोशन ग्रीड को जीतना है, और उसके लिए हमें जानना भी है और उसे जीना भी है। इन भावनाओं के साथ ओम अर्पण। डॉक्टर अभिजीत मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पर्यूषण काल में भी, जब उनका और भी जगह प्रवचन रहता है, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी को अपने प्रवचन के द्वारा या इस टॉपिक पर हमें लाभान्वित किया है। मैं इस यात्रा को आगे लेके जाते हुए प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आगे के टॉपिक पे हाउ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी कैन कंट्रोल ग्रीड, इस पे हमें अवगत कराएं। डॉक्टर मुनिश्री, प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी। संदेशु निम्मलयरा आयितेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्। आराध्य देव के चरणों में वंदन, अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। यहाँ हमारे इस नेशनल सेमिनार में उपस्थित सभी विद्वद्गण और विशेषतः सोमैया यूनिवर्सिटी के वे एजुकेशनिस्ट इंक्लूडिंग द वाइस चांसलर। हम समझते हैं कि सोमैया विश्वविद्यालय हमारी मुंबई की एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है और बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में उसके द्वारा हो रहा है, लेकिन ये काम जो पिछले 8 महीने से सोमैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो रहा है, मैं समझता हूं ये सोमैया विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा अवदान समाज, इसलिए कि हम दर्शन और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान, जैन दर्शन और विज्ञान, इनके माध्यम से आज मानव जाति की उन सभी समस्याओं पर चिंतन करने जा रहे हैं। केवल चिंतन नहीं, उसका उपाय, और उपाय भी कैसा? थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी and technology may be spiritual technology. Let us find out the ways and means to control all these sins, all these bad actions, all this behavior which make our life wretched. ये सारे जो कषाय कहलाते, क्रोध मान माया लोभ की चर्चा हुई। लोभ की कितनी चर्चा हुई? लोभ के विषय में जैसे एक आदमी होता है और एक दूसरा आदमी जो है गंदा है, बदमाश है, वो उसको क्या कहता है? वो अच्छा आदमी भी उसको खाली गाली देता है, अरे तुम बदमाश हो, तुम गुंडे हो, तुम। वो चाहता है कि वो चला जाए, तो नहीं जाएगा। हम लोभ को चाहे कितना ही बदनाम करें, लोभ के कितने ही अवगुण गाएं, वो ऐसे जाने वाला नहीं है। वो बड़ा कहते हैं ने, वो निशर्मा है, उसको शर्म नहीं आती। आप कुछ भी कह दो, सारी दुनिया कह रही है ये लोभ खराब है, लोभ पाप का बाप है, ये है, सारी दुनिया परेशान है, लेकिन वो लोभ तो जाता है। वो इतना पक्का है कि सारी दुनिया को परेशान करता होगा। आप कुछ भी मुझे कह दो, आई विल नॉट गो। एक छोटी सी कहानी, घटना। एक छोटा बच्चा था, छोटा मतलब 10-1 साल का, समझिए। एक दुकान पर गया, दुकानदार से अपना जेब में से नोट निकाल के दिखाया कि प्लीज गिव मी 1 पेन लिखने का, मेरे पास ये 10 रुपया की नोट। तो दुकानदार ने अनेक प्रकार के पेन था, उसमें वो 10 रुपया वाला पेन, टेक दिस एंड गिव मी 10 रुपीज। अब वो बच्चा इतना होशियार, वो बोली में भी बड़ा, कहते नहीं, बड़ा प्यारा लगता। तो उसने कहा, अरे अंकल तुम मैं 10 रुपया लेकर 1 पेन देते हो, मुझे 2 दे दो ना, तब तुम बहुत अच्छे अंकल हो। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करने लगा, उसका मन पसीज गया दुकानदार का। उसने कहा, चल ले 2 ले जा, चल। अंकल 2 क्यों, मुझे 4 दे दो ना, ऐसे करता गया। अब बताओ उसका कोई एंड होगा क्या? ये आम बच्चे की तरह सारी दुनिया ऐसे ही कर रही एकदम। मैं नाम लेता हूं इसलिए नहीं कि वो आदमी ऐसे, लेकिन आपको पता चले आज भारत में नाम आता है अदानी, अंबानी, ये वो फलाना। अभी डेथ हुई झुनझुन वाला, कहा जाता था वो बुल क्या पता नहीं क्या ऐसा था, और सब। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूं इसमें, लेकिन हमें सोचना है ऐसे जो अनेक लोग इंडिया में हैं जिनको हम मल्टी पता नहीं मिलियनियर बिलियनियर कहते हैं, और उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन आप देखिए ये जो है
पैराडॉक्स कितना है, इधर तो ये मल्टी 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 मिलियनर बढ़ते जा रहे हैं और उधर पुअर 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 उसकी संख्या बढ़ती है। इसका मूल कल्प्रिट कौन है? सिस्टम, द इकोनॉमिक सिस्टम which prevails all over the world, whether it is capitalism, whether it is communism, but the main root is materialism. Unless the materialistic worldview would change in the minds of people, you can't make them free from greed. Because materialistic worldview is the worldview. It is the belief. It is your own conviction that I have to get more and more and more and more and most higher than most. What is this nonsense? You can't change it unless you brainwash your own brain from this wrong conviction, from this perverse worldview, which is called mithyatva. So if we want to become free from the clutches of greed and the consequential bad effects, wrong outcomes, and all unhappiness which prevails in the world, up to the, they say, the scientists, if the greed is increasing like this, if the environment is polluted like this, doom, nothing will change. We don't hear that. We close our eyes. Let them say. They are scientists. They are not gapolists. They are giving you fact that within so and so years, if you don't control all these emission of carbon or that thing, doom. We don't want to hear. UNO, WHO, big universal international institutes, they are our protectors of humanity. But either they don't take it seriously, find out actual way to solve the problem, or maybe that people may not hear them also. Because of their greed, they say, you go to hell. We don't want your advice, we will go as we are. Let the doom come. If it comes tomorrow, let it come today. But we will not give up all these things. We want to live in present, and we have to increase our greed, our production, our GDP, our per capita income, and all this, so on and so forth. No end. Now what can we do if UNO fails, WHO fails? Then why to do all these exercises? Would Somaiya save, or would Mahendra? Who will save the world then? Why making such efforts? Is it worthwhile, or it is humbug, nonsense? A few people we are here. I don't know how many the participants. There may be only a few one. Doesn't matter. But what I want to stress is, we should not become dispassionate. We should not be overruled by nirasha. No. Let us keep our hope alive. Try and try again and again, and let us do our job, our duty, what we think good for all. Then let us show this way to the whole world. If people will accept, the problems will be solved. If people do not accept, then whatever is going to happen, let it happen. Now the thing is that we have talked much about
the negativities of the greed and the problems created by the greed. In Shastras also, in scriptures, in all sacred books, always the saints and the lords and the rishis and the munis and the yogis, they have given all these facts for the very long time, everywhere, not only in India, everywhere. That the greed is the main culprit which makes us unhappy, which disturbs our peace of mind, and which is never ended. And therefore, greed should be given up by santosh, by contentment. They also show the way. But the difficulty is that how to bring contentment in the mind. Now we come to science and then spiritual philosophy. What is actual spiritual philosophy which explains the strong root of greed? Why greed is so strong rooted? According to philosophy, spiritual philosophy, it is the sanskaras that are going on every religion in any form or one form or other. They believe that there is these sanskaras, that sanskaras multiply them, breed them, sanskaras give birth to another similar sanskara, and so on and so forth. Those who believe in reincarnation, they say even the sanskaras of the past lives, they are with us, and they are the main culprits for perpetuating such passions like which we call koshai, krodha, mana, maya, and love is the gang master, main culprit. But then what? How to nullify these sanskaras? Then there is according to theory of karma, the past karma are responsible for the present behavior. If I have collected, which is technically called as lobha mohaniya karma in the theory of Jain karma doctrine, lobha mohaniya karma. Mohaniya karma, that is deluding karma. It deludes, creates moha, and everything becomes upside down. You know, nasha. You know, the moha karma is compared with a madhyapan, drinking. Just like a drunkard, he drinks, and then he gets nasa. Now in nasa, what will happen? Everything becomes topsy-turvy. One story I will tell you. A drunkard used to drink every day. And his wife every day taunts him. Hey, you, why are you not giving up drinking? You should give up. Then he says, oh, today I will not. False promises. After all, the why? What can she do? One day he comes and say, my darling, my wife, my dear, I will not drink today. I will come straight from the work to. She became very happy that by his own he is studying. So he must keep the promise. Again, the same thing. That when evening came, he remembered that I had given the promise, but he could not resist himself. Sanskaras. He again went to the wine shop, drank, and come back to home. Now, in his subconscious mind, there was this talk, I will not drink today. Now, how I will convince my wife that I have not drunk? So he entered the house in the village. There was a big compound. In the compound, there was on one side the cattle, buffalo, cows, etc. And there was then veranda and the building. The wife was standing in the veranda waiting for. So he thought that I will go enter into a house and I will talk with my wife some affectionate words, some words of love, and she will not know that I have drunk.
So he entered the house, and now in Nasha he didn't know what I have to do and what I am doing. Slowly he went inside, and the buffalo was there still. Buffalo was there. He caught the tail of the buffalo and said, पप्पू की माँ, रोज तुम 2 चोटी बनाते हो, आज 1 चोटी क्यों बनाई? The wife was amazed and said, what to do now? He didn't know whether this is Pappu ki maa or the buffalo. This is delusion. So this moha is delusion. Now sanskara karma in neuroscience, biochemistry, the culprits are our negative biochemical secretions, our negative neurological phenomenon. The neocortex in the brain is rational brain. The most developed result according to Darwin theory, the things climax of the progress or the development or evolution, neocortex, which is absent in other animals, only human beings have. And other is the limbic system, the frontal lobe, and other parts, they're irrational, which we call as instincts, bestial instincts, negative instincts. They are all controlled by the frontal lobe. Limbic system, center being hypothalamus, and many other centers like amygdala, etc. Dr. Pratap Sanjeti can explain all these things more than what I can do. But we have to understand the gist that on one side, according to spiritual philosophy, religious philosophy, karmavad, they are the karma sanskars. According to scientists, biologists, these are these negative secretions, negative phenomena, and not the control of neocortex over limbic system or animal brain, but the reverse. The animal brain now controls the neocortex. The animal brain, the bestial instincts, the effects of sanskaras, they are so powerful that in your neocortex you have the knowledge of dharma. You know many good things. Love is very bad. Love is pap ka baap, everything. But this system, autonomous system, it secretes the negative chemical, biochemical hormones, the negative neurological phenomena. It catches hold of the neocortex. And then go as they want to go. And then again, same thing, NASA. I have got 10 billion rupees in my bank. Next year, I have to make 20 billion rupees in my account. I want to go, I want to surpass Ambani and Adani and everyone, number 1 in India, and then number 1 in the world. So then what you can do? Nothing is in your hand, everything is automatic. Then why to talk about all these things? Is it not then nonsense? Futile? If it is not in our hand, all these sanskaras are there. No, we should not become this person. No, optimist. Because the science also says, because the spiritual philosophy also says, you have the power inherent in yourself, inherent in your consciousness, inherent in your Atma. And people say, Paramatma is in Atma. Your Atma is Paramatma. Immense power, infinite power. Just you have to exercise it properly. One more joke I will tell you. One time in the train, a traveler was traveling, and he had a big tin of deshi ghee. Deshi ghee, you know, very powerful, energetic.
So he had got in his hand. He wanted to keep it somewhere. So he was looking. So there was the chain for stopping the train. He said, this is the best place. So he tied that tin to the chain, and the chain came down and the train stopped. And he said, this is the chamatkar of Desi ghee. My Desi ghee has stopped the train. So in this way, you don't know this, you are using this power wrongly. The same thing, we have got the power, we have got the energy, we have got the antidote to Krodh, Man, Maya, Lobh, everything. We have to exercise it. Put it into kinetic energy from potentiality. And that the Karma Shastra helps us, the spiritual philosophy helps us, the religions helps us, and also the biologists, the neurologists, the biochemists can give us the hint that how to calm down the negative, destructive emotions. They have found out some clues, and we have got from heredity certain things to calm down this surge of greed, at least to bring it under a fair and just control. Ultimately, we have to come free from it completely. But now and here, in this worldly life, in society, in humankind, if we became successful through the combination of spirituality and biology, science, technology, spiritual technology, then there is a hope of ray. But now how to do this? How to do this? I think the time has gone beyond the limit. So what I will suggest now is to let us stop here. And in the next, our next, this monthly September, let us take this subject, the how to conquer greed. We have already discussed about greed. Contentment is the main source, main key to conquer greed, but how to get oneself contented? And what are the various agencies that can help us, and so on and so forth. So I will like to suggest all of you to think over this thing, and let us have a debate, like a session in which no such kind of just addresses. Let all participate and give suggestions in what way we can become successful in making the humankind free from this greed, by the changing of economic system, by changing the education, by so and so and so and forth. Let all people here think. Let us invite many more, and let us see after the discussion if we can find something concrete. Then let us implement and go further, march further, until and unless we get our destination. Thank you. Okay. प्रोफेसर महेंद्र मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि वर्ल्ड का जो चाइल्ड जैसा बिहेवियर है, अपरिपक्व व्यवहार, जहां संचय की कोई सीमा नहीं है, उन्होंने हमें इस पे आगाह किया है। उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को भी एक किसी तरह से लोभ को बढ़ावा दे रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम भी, वो भी उन्होंने बताया है। लोभ संस्कार रूप में जीव से एक बॉन्डिंग किए हुए हैं और वही रागात्मक एक्टिविटी का भी एक रूप लिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि डार्विन थ्योरी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने माइंड, बॉडी का कौन सा पार्ट है जो लोभ के लिए कारण है, वो भी उन्होंने समझाया। और एनिमल माइंड को एक तरीके से उन्होंने एक रीजन भी बताया है। हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बाकी के जो स्पीकर थे, जिन्होंने मॉडरेट के रूप में प्रताप संचेती जी ने इनिशियली हमें बताया था
कि किस तरह से ग्रीड इंडिविजुअल डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, वो नेगेटिविटी के रूप में। इसी तरह से डॉक्टर अनिल जी ने हमने बताया था कि वो इससे इफेक्ट क्या होते हैं, व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। उन्होंने दार्शनिक दृष्टांत भी बताए, उन्होंने अनुभव स्तर के भी समझाया और उसके करंट और फ्यूचर इफेक्ट भी बताए हैं, और वो किस तरह से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। इस तरह से उन्होंने एक तरह से जैनिज्म के अनुगत की तरह इशारा किया है। कमल जी नौलखा के लिए भी हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने लिबरेशन में एक किसी तरह से लोभ को बाधक तत्व के रूप में समझाया, मोक्ष का बाधक तत्व के रूप में। उन्होंने इसका भावनात्मक स्तर पर जो इफेक्ट है वो समझाए। एक ऐसा इल्यूजन जो इंद्रजाल की तरह असर कर रहा है हम पर, वो उन्होंने समझाया। और इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो इनइक्वालिटी हो, पावर्टी हो, या कहते हैं ना कि किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है और किसी के पास पैसे रखने के लिए घर नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये समझाया था। उन्होंने बताया कि इसको ओवरकम करने के लिए किस तरह से हम इच्छा परिणाम एक अनुव्रत जो उसके द्वारा अपरिग्रह के मतलब उसके द्वारा बेनिफिट क्या हो सकते हैं वो समझाया उन्होंने। अपरिग्रह के रूप में उन्होंने बेसिक नीड्स की मर्यादा को समझाया है, बेसिक नीड्स की भी मर्यादा रहे। आगमिक व साइंटिफिक एस्पेक्ट जो उन्होंने लिए हैं साथ में इसको समझाने की, उन्होंने बड़ी अच्छी सफल कोशिश की इसमें। लोग वस्तुओं का संचय न होकर वस्तुओं में मोह है, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको समझाया था। और अणुव्रत के किस तरह से इसमें लोभ को ओवरकम यानी कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने वो हमें बताया था। डॉक्टर अभिजीत मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत आभार। उन्होंने लोभ का अनादिपन बताया है, वो जीव के साथ या पुद्गल के साथ हो। उन्होंने लोभ किस तरह से हमारे जीव के साथ एक ही पन किए हुआ है, यानी कि वो जीव खुद लोभ को और खुद को अलग ही नहीं समझ पाता, ऐसा वो इस भ्रमजाल में फंसा हुआ है। उन्होंने इच्छा और जरूरत ये दोनों को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लोभ से किस तरह से बचा जा सकता है जब हम ये समझ जाएं इच्छा क्या है मेरी और जरूरत क्या है। उन्होंने बोलते ना इंसिस्टिंग और रेसिस्टिंग की जगह उन्होंने कनेक्शन मैनेजिंग कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझाया है। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी ने तो हमें एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अभी आगे इस यात्रा को लेके जाते हुए जो पैनलिस्ट डिस्कशन है उसमें वर्षा जी आज शायद उनकी कनेक्टिविटी लो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, फिर भी उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन रखे। उन्होंने कमल जी से तो क्वेश्चन रखा था कि किस टू व्हाट एक्सटेंट वन कैन ब्रिंग रिकंसिलिएशन बिटवीन कंज्यूरिज्म एंड इच्छा परिमाण। तो उन्होंने बताया है नौलखा जी ने कि वन कैन इसको रिकंसिल कर सकता है, मटेरियलिटी जो अप्रोच है उसको मिनिमाइज करके किया जा सकता है, उन्होंने लिखा है। और साथ ही आई थिंक विमल जी ने एक सजेशन रखा है कि क्यों ना हम इस पे एक सुसाइडल लेवल पे जो एक और सेमिनार की जाए जो बहुत लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। इस पे आगे हमारा जो मैनेजिंग टीम है वो सोचेगी। हमारे बीच आगे के लिए अभी सुप्रिया जी हैं अवेलेबल हमारे साथ। हम चाहेंगे कि सुप्रिया जी इस पैनल डिस्कशन में अपने व्यूज रखें। इसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर महेश जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी हैं, वो भी अपने व्यूज रखें। सुप्रिया जी आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मुनिश्री मेरा प्रणाम, and Dr. Abhijt Munishri also, and to all of you here. Thank you very much for these sessions which have been going so well, so well. आज का ये जो topic है actually जैसे मुनिश्री ने कहा, it is a very big topic where it would be really good to carry forward the discussion on practical methods of addressing this on the ground. And actually मुनिश्री के जो एड्रेस के बाद मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि he included so many dimensions, and the one which is absolutely the crucial one is our economic system, because as long as there is a share market, as long as that is driven by measurement of growth, मुनिश्री मैं आपको बस एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारे कैंपस में मैनेजमेंट कॉलेज भी है। We teach, we train young managers and they go out and get jobs, and we were discussing this precise thing with them, that tomorrow when somebody is employed in a company, if he is employed in sales or marketing, उसकी जो performance appraisal होती है, it is going to be based on how much more he managed to sell based as compared to the other company's products.
So everybody is measured on their performance, on their profit, on how much more, and uske zariye wherever we look, and this is especially a problem for young people, advertisement ke zariye you are constantly being bombarded with messages which have a very, very profound psychological impact. ये मैसेज इसमें क्या होता है कि अगर ये प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर पाते, then there is, your life is not really okay. When you have a car like this, you will look successful. When you have a home in this kind of an area with this kind of amenities, then you are successful. So हमारे बीच actually our life, the way we lead it, is being constantly, the messages that are being bombarded to us is that you must consume. So in a way, what we are discussing here is how to be, actually it is a, in the present circumstances, almost like a counterintuitive thing, swimming against the tide, because the tide is pushing you to consume. And when you are young, especially young people, it's very hard, Munishri. The, you know, jo peer pressure unpe hota hai, to look a certain way, to have a certain type of phone. I remember I used to have for the longest time a very old phone, because SMS or phone ring, पहले तो ये सब smartphone ये सब आया ही नहीं था. And my students used to laugh कि मैम आपका phone इतना पुराना, don't you think you should get a new one? Oh, what do I use it for SMS and phone? It is doing it. Why should I? But there is this, if I am in a certain position, I must have a certain kind of external paraphernalia which supports and reinforces my position. These are subtle things which continuously keep us. Greed is like a treadmill, no? Once we get onto it, there is no way off. And so one of the things which I think we can consider is how to counteract, and one of the ways in all our Shastras, Jainism, Hinduism, Buddhism, दान को हमने क्यों माना है? Why is giving so important? Giving is important because the act of giving, in many, many ways, of course, as we progress on the spiritual path, we give in many different ways. We give of the Dharma teachings, we give of our own self, we may give of our own life. But giving is an antidote, really, and helps us cultivate a sort of opposite, you know, instead of just how do we suppress greed, but we can counteract it by encouraging the spirit of generosity. This is what I think I would just like to share before, you know, we go, you know, for the next time. And in this, my own reading, I thought since it's a very interesting group, I will put forward. There is a Munishri, a philosopher from Australia, Peter Singer. He did a lot of work in this field, particularly in bioethics, has been involved very much in the animal rights movement. He himself, and Australians as a community, they consume a lot of meat. He has stopped eating meat in 71, and their work inspired a group of people who actually, when they took up a job, if the salary, say for example, if the person is earning 1 lakh rupees, उन्होंने तय किया कि मेरी जरूरतों के लिए मुझे 35,000 चाहिए, बाकी का I will give. And this is how a community called, you know, effective altruism is quite active. It is, their information about them is available. My humble suggestion would be that how do we, and within the Jain tradition, there is so much giving. There are so many foundations which do so much. This is a message which we should share and promote as a sort of antidote to greed. This would, with these few words, I will rest here. Tarunji, back to you. धन्यवाद सुप्रिया जी, बहुत ही आपने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें बताया है कि ग्रीड और कंटेनमेंट के बारे में. बहुत बहुत धन्यवाद. वाइस चांसलर साहब के मैसेज को मैं आगे बढ़ाता हूं. उन्होंने कहा था कि नए फेसेस और नया ब्लड इन्फ्यूज किया जाए. अब पैनल में मैं
डॉक्टर महेश आबू रोड से हैं। मैं इनकी क्लिनिक में जा चुका हूं और अभी भी वो उसी क्लिनिक में ही बैठे हुए हैं। डॉक्टर महेश, प्लीज। Very good afternoon to everyone. Jai Jinendra. I am deeply motivated by Dr. Pratap Sancheti. I heartily thank him for inviting me to join this discussion. So, अभी मैं प्रेक्षा ध्यान पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, मैं उसमें ज्वाइन किया हूँ. आई एम डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द philosophy of Jainism towards perfection and towards attaining केवल ज्ञान. क्या है कि ये जो आज का टॉपिक है, ग्रीड को कॉन्कर करने की बातें हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब आप एक आम की पेड़ को लगाने की लक्ष्य में जाते हैं तो आम मिलता है. आप एक बड़ा जमीन लेकर के 100-200 आम के पेड़ लगाने के लक्ष्य में जाते हैं तो उतना ही आप फल प्राप्त करते हैं. तो ऐसे ही नहीं, हमारे जीवन में हम जो है ना वायलेंस को कॉन्कर करना है, ग्रीड कॉन्कर करना है, इतना ही छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के जाएंगे, उसी में मेहनत लगेगा आपको. लक्ष्य ये होना चाहिए केवल ज्ञान को मुझे प्राप्त करना है. आई हैव टू अटेन इनफाइनाइट नॉलेज. प्योर इनफाइनाइट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है. जब बहुत ऊंचा लक्ष्य रखते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें कॉन्कर करना बहुत मुश्किल नहीं लगती. दूसरा ये है, जैनिज्म का एक बहुत सुंदर डायमेंशन ये है कि नॉन वायलेंस को लक्ष्य लेकर के अगर आप ध्यान करते जाएंगे तो एनलाइटनमेंट मिलेगा. ये तो फाइनल है. क्या आप ये नहीं समझते कि ग्रीड भी एक तरह से एक वायलेंस है? आप देखिए, जब आप लंच में ब्रेकफास्ट में जो भी है, आप जरूरत से बहुत ज्यादा 2 गुना ज्यादा खा के देखिए कितना डिस्कम्फर्ट होता है खुद को, दूसरों को. तो उतना ही जब आप बहुत लाइट खाते हैं, उपवास रखते हैं, तब कितना आप अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं, दूसरों को भी कंफर्ट देते हैं. ये भी एक प्रकार की बहुत ही सटल सूक्ष्म वायलेंस है. तो जब आप लक्ष्य रखते हैं कि मुझे ये इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट एक्सपीरियंस, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है, जब ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तब आप ये ग्रीड को भी कॉन्कर कर सकेंगे. फिर दूसरा है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी. स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत लोगों ने कम बोला. क्या है कि यही तो इंपॉर्टेंट है ग्रीड कॉन्कर करने के लिए. इसके लिए चाहिए प्रेक्षा ध्यान की डेप्थ. मैंने डॉक्टर संचेती सर से बहुत रिक्वेस्ट की, सर मैं डीपली इन्फ्लुएंस्ड हूँ आचार्य महाप्रज्ञ से, तो क्यों ना आचार्य महाप्रज्ञ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खोले हम ये लखनऊ में, जहाँ देश विदेश से अच्छे स्कॉलर्स आए, अपनी प्रेक्षा ध्यान के एक्सपीरियंस शेयर करते जाए, दूसरों को मोटिवेट करते जाए. क्योंकि प्रेक्षा ध्यान के अंदर इतनी वैरायटी ऑफ डायमेंशंस है, उसको साधना करते करते यू विल अटेन ए डीप साइलेंस. जब आपकी डीप साइलेंस की अनुभूति होगी तो आप ये सब चीजें कॉन्कर कर सकेंगे. आप देखिए, आप वो सुबह की आप ब्रेकफास्ट है, उसमें 30 मिनट्स प्रेक्षा ध्यान करके ब्रेकफास्ट कीजिए. आप देखिए कितना कैसे खाते हैं. और दोपहर में भोजन है, 30 to 40 मिनट्स या 1 आवर प्रेक्षा ध्यान करके भोजन कीजिए. तो आपका इनपुट कम होगा, आपकी टेस्ट बड्स को कंट्रोल रहेगा. कितना एक छोटी, दिस इज वेरी छोटी बात है इसे, तो कितना कॉन्कर करने में इजी महसूस करते हैं. तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वही है. तो उस डेप्थ को महसूस करके जब आप वो टेक्नोलॉजी की एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे, वो हमारे अंदर वो आता रहेगा, उससे दूसरे भी इन्फ्लुएंस होंगे. तो इसीलिए आज की इस महासभा में मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ. और इस जो भी एक्सपीरियंस शेयर करने का वर्कशॉप रखे, ठीक है, थियरी एक अलग बात है, प्रैक्टिकल में जो भी अभी जैसे मैडम ने शेयर किया कि कैसे वो अपने स्टूडेंट से मोबाइल की बातें थी शेयर किया, ऐसे हर एक शेयर करे. अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल भी शेयर करता हूँ. हमारी एक आश्रम की बड़ा कैंपस में पहले पानी बहुत भर जाता था, उसको ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था. जब ड्रेनेज सिस्टम बनाने में कम से कम 6 महीने लगे, 9 महीने लगे, तो उसमें
भी इतना लंबा बरसात होने के बावजूद भी पानी वहां इकट्ठा नहीं होता है। तो ऐसे ही है, जब आप ये केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लक्ष्य में आप सभी जा रहे हैं ना, बहुत रिसोर्सेस आएंगे आपके पास, हजारों करोड़ों रुपए आपके पास आएंगे, रिसोर्सेस आएंगे, लेकिन देने की इच्छा तब आएगी जब आपके अंदर प्रेक्षा ध्यान की साइलेंस की अनुभूति होगी, प्रेक्षा ध्यान की डीप एक्सपीरियंस होगा। उस पे ध्यान रखेंगे तो रिसोर्सेस सब सफलता पूर्वक आप दूसरों के पास लगा सकेंगे। नहीं तो कलेक्ट होता रहेगा, जैसे मच्छर पैदा होंगे, इट विल हर्ट यू ओनली, आपको ही नुकसान करेगा। तो इसीलिए अब इस पे हमें ध्यान देना है, और जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाएंगे प्रेक्षा ध्यान पे, आप साइलेंस में अपनी अनुभूतियां बढ़ाते जाएंगे, तो उतना आप दूसरों को फायदा पहुंच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर महेश, बहुत सुंदर बातें आपने बताई। हमें सबको ध्यान करना है इनके बारे में। हमारे बीच में यंग डॉक्टर अरिहंत जैन जी हैं, आज इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं इनको वेलकम करता हूं। इनसे बहुत ही परिचय है, बहुत ही ज्ञानी आदमी और बहुत ही सुंदर विचार वाला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कुछ विचार हमें भी प्रस्तुत करें। जी, thank you so much, sir. Honorable Vice-chancellor, sir, Honorable Director, ma'am, मुनिश्री को मक्खर वंदामी और सभी विद्वानों का वेलकम। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, इट वाज रियली वंडरफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ग्रीड के बारे में बात हो रही है तो मुझे एक धबला ग्रंथ में एक सूत्र आता है, बाह्यार्थेषु ममेतम बुद्धिर्लोभः। तो इसको अर्थ किया है कि बाह्य पदार्थों में जो ये मेरा है, इस प्रकार की जो राग रूप बुद्धि होती है वो लोभ कहलाती है। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट टू बी कॉल्ड ग्रीडी, एंड द ग्रीडी प्रिवेंट अस फ्रॉम गिविंग एंड शेयरिंग। So we should be content with we have and only accumulate to meet our needs. Greed destroy the peace and happiness while caring bring them back. So greed is the root cause of all corruptions, unethical conduct and practices. And someone said, I remember, greed is not a financial issue; it's a heart issue. हमारे यहाँ जैसे तत्वार्थ सूत्र में एक परिग्रह की, जैसे नौलखा सर ने बहुत ही अच्छी अपरिग्रह की कंटेंट बहुत अच्छा बोला उसमें, और तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह की बहुत ही छोटी सी परिभाषा आचार्य उमा स्वामी ने दी है कि मूर्छा परिग्रह। मूर्छा यानी इनफैक्चुएशन इज अटैचमेंट टू पोजेशन। तो इसमें ये यहाँ पे हमारे यहाँ भेद विज्ञान की यहाँ पे मूर्छा परिग्रह में ये बताया आचार्यों ने कि हम कहाँ तक परिग्रह को गिनाएंगे, ये गिनाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज छूट जाएगी। लेकिन जो मूर्छा है, आसक्ति है, वो ही परिग्रह है किसी भी चीज के प्रति। हम जब अपरिग्रह की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग संन्यास की बात करते हैं या श्रमणों की बात करते हैं, लेकिन जब हम गृहस्थ, जब लेमैन है, तब हम कैसे अपरिग्रह को अपना सकते हैं? सब कुछ होते हुए भी उसमें ममकार या आसक्ति नहीं होना, मूर्छा नहीं होना, ये मूर्छा परिग्रह। तो ये चीज यहाँ पे मूर्छा आचार्य उमा स्वामी ने बताई। और साथ में एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, आप लोग ने बहुत कुछ इस विषय पे प्रकाश डाला है, तो मैं बस थोड़ी सी बात यही कहना चाहूंगा कि जैसे सर ने अभी केवल ज्ञान की बात कही, एक और इसमें कंटेक्स्ट आता है भेद विज्ञान। अगर भेद विज्ञान यानी एबिलिटी टू सी द सोल एंड बॉडी सेपरेटली, तो if anyone have greed for something, so he should think once that all the things that I can get my greed will not make it with me to heaven, so they will remain in this world and will be possessed by someone else. तो भेद विज्ञान की जो कला है कि जब शरीर ही अपना नहीं है, शरीर और आत्मा ही जब जुदा जुदा है, तो फिर हम बाहरी चीजों की जो अपेक्षा रखते हैं वो किस आधार पे रखते हैं? तो भेद विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि वस्तुओं को भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि भेद विज्ञान के अंतर्गत भिन्न वस्तुओं के मात्र भिन्न भिन्न उसको जानना, ये भेद विज्ञान कहलाता है। तो अगर ये भेद विज्ञान हमें हो गया
तो ये जितने भी क्रोध मान माया लोभ कषायों की बात हो रही थी, तो ये भी हमारे आत्मा के ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव परिणाम कहलाते हैं। जब वेद विज्ञान हो जाएगा तो फिर ये सब चीजें अपना ही स्वतः ही चली जाएंगी। So whatever you greed for means that does not belongs to you. So if someone something is supposed to or belongs to you, you will get it someday. So we should develop the habit of helping others by offering what we have. So just I want to say this only. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। वाइस चांसलर साहब ने सही कहा, यंग ब्लड से हमें ज्यादा सीखने को मिलता है, आपने ये प्रूव किया है। और कोई अगर अपने विचार देना चाहें, कोई लास्ट मिनट पे कोई मतलब अपने कोई सप्लीमेंट्री आइडियाज या कोई विचार। अशोक जी कोठारी आप। हाँ सर, जय जिनेंद्र टू एवरीबॉडी। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई राइट फ्रॉम बिगिनिंग। जब आपने ग्रीड को एक ब्यूटीफुल इमोशन कहा और उसके बाद यू वेंट ऑन टू एक्सप्लेन हाउ द एक्सेस ऑफ ग्रीड इज बैड, और सारे डिस्कशंस डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब ने जैसे कहा कि इसका सॉल्यूशन है कि हम संयम रखें, या जो उन्होंने कबीर का दोहा सुनाया, और उसके बाद आपका ये मुनिश्री का जो पर्सपेक्टिव तो हमेशा खैर एक इंस्पायरिंग रहता है। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस, और आपने यंग ब्लड को जोड़ा, उन दोनों के विचार भी मुझे बड़े अच्छे लगे। एंड जैसा पिल्लई सर ने कहा कि हम लोग और युवा लोगों को जोड़ें आगे की कॉन्फ्रेंस में, वो आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तरुण जी ने once again he has conducted the conference very well. Wonderful. Thank you. सर मेरा एक if you allow I just want to share something. Yes sir. अभी एक बात आई, दान दया की बात आई और हम की चर्चा करते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि एक बार इस पर खुल के चर्चा हो कि दान दया में और ग्रीड में क्या फर्क है, या उसका रेजोल्यूशन इसके थ्रू जो दान दे के और सिलाई से धर्म को अपनाना चाहते हैं, हाउ ये तर्कसंगत कैसे बैठता है? इज देयर सम यूनिफॉर्मिटी और आर दे टोटली डिफरेंट? So let us have one session going forward whenever, and महेंद्र मुनि सर यहाँ पर हैं, महाराज साहब से कुछ उसमें और अंतरंगी बातें आई, तो ये थोड़ा सा क्लियर होना बहुत जरूरी है कि दया क्या होती है, दान क्या है, और उसका ग्रीड से क्या संबंध बनता है। और क्योंकि लोग बहुत कमाते हैं, अफला तुफली तरीके से कमाते हैं, और फिर दान दया करके और सोचते हैं हम बहुत धार्मिक हो गए, तो ये ग्रीड से कहीं ना कहीं इसका लिंक मुझे दिखता है आज के सेशन से मुझे। तो मैं अनुरोध करूंगा ऑर्गेनाइजर्स की महेंद्र मुनि का सानिध्य अगर इसमें मिलके एक सेशन हो जाए। नौलखा जी आपका पर्सपेक्टिव, ये आपका पर्सपेक्टिव बड़ा सुंदर है, आपका आज का टॉक भी बड़ा अच्छा रहा, और आई थिंक संचेती साहब से हम डिस्कस करेंगे आपका जो ये जो विषय है उसके पर भी शायद हम लोग अगला कोई जो टॉक इस पे रखें। धन्यवाद, बहुत सुंदर लगा आज आपको सुन के। वंडरफुल, थैंक यू सर, आई एम ऑब्लाइज्ड। नौलखा साहब, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, दान की परिभाषा में प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। तो जब ये प्रदर्शन हो जाता है तो दान नहीं होता है। और आजकल जो आपने जो संदर्भ दिया था वो प्रदर्शन वाला था, जो कि बिल्कुल उल्टा है। उल्टा नहीं मतलब वो पाप युक्त है। तो इसीलिए पर आपका कहना सही है। मुनिश्री ने जो कंटेनमेंट के बारे में जो नेक्स्ट सेमिनार बताया उसमें हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सर हो सकता है मुनिश्री कभी इस पे विस्तार से बताएं कि कभी संचय में तो लोभ है ही है, और हो सकता है ना दान में भी आजकल नाम का लोभ हो, तो वो शायद किसी तरह से एक्सप्लेन करें आगे। बिल्कुल सही आपका कहना। तो आप एंड कर सकते हैं तरुण जी। आप सभी स्पीकर्स का, ऑडियंस का, स्पीकर्स का मतलब बहुत अच्छे से इस पूरे सेशन में कंट्रीब्यूट किया है, और एक नया आयाम जो दिया है बहुत सारे लोगों को। इस जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इस पे एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। आप सभी स्पीकर्स का सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली मुनिश्री के प्रति तो बहुत बहुत आभार। वो तो एक ऑलराउंडर हैं, मतलब कोई टॉपिक उनके मुझे अछूता नहीं है उनसे।
तो मैं अभी इस आज के सेशन को फिनिश करने के लिए मुनिश्री महेंद्र कुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आज के मंगल पाठ से हम सभी को लाभान्वित करें। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों शरणा सगा और सगा नहीं को, ये भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर पद ओम अरहम ओम। आपके प्रति बहुत बहुत सभी से सही जिन्हें आज का सेशन यही हम अब फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद।